बिल्ड कर दिया था बिकॉज कॉमन फॉर स्पेशली प्लांट ग्लाइकोलाइसिस लाइफ साइकिल वो सब मैंने बेसिकली जो पहले किया था उसको सिर्फ रिवाइज किया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यस, बराबर। आया ना? ओके, कौन सा चैप्टर बाकी है अभी? ये लास्ट है यार, सारा फॉलो में यार जी। और बाकी है दो चैप्टर। आपका व्यूअर्स मेरा बाकी सब जगह हो गया। कल मैंने नेवी खत्म किया, परसों मैंने वाशिंगटन सर मुझे कुछ भी कर सर बायो का है 28 से 2 system 8 to 12 and respiratory system 3 बार। पहला वो मेरे 1 घंटे का 2 घंटा लगेगा आपको मास्टर में 2 घंटे की। ओए रख नखरा अननेसेसरी। अब पूरे साल भर में कोई पेन यूज किया है, आज दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। आज नहीं वो नहीं क्या पेन भी पेन पे काम करती है कभी कभी बस ना कर तो क्या। Okay, for typing I want you to put your books upside down. Now the moment I say respiratory system, what are the parts of क्या हॉस्पिटल में क्या Okay, what are the part of human respiratory system? अच्छा, पहला लंग्स, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता होगा। तुम्हारा कोई सीक्वेंस नाम का चीज है? नोज भाई है या नहीं? सबसे पहला नोज which has S and mucus के बाद Not mentioned, but nasal cavity. After nasal cavity, we have nasopharyngeal cavity, a common part basically. From there, it enters into the pharynx, a common pathway, which would continue to form what we say as larynx. बोलते जाओ। एक तो फ्लैप ऊपर है, ऊपर से गर्म हो है। उसके लिए थोड़ा बहुत बॉडी के ऊपर मास होना चाहिए। आयन नरिश कैटेगरी। बस बोलते हैं क्या? ओके, ट्रकिया, देन
Further divided into primary, secondary, tertiary, which further divides to form bronchioles. Further again divided into primary, secondary, tertiary. Okay. अब the प्रक्रिया पार्ट के बाद जो ब्रोंका आता है, फर्दर डिवाइड मेन डिवीजन प्राइमरी, उसका फर्दर डिवीजन सेकेंडरी, उसका फर्दर डिवीजन टर्शियरी, उसके आगे फिर ब्रोंक्यूल्स, उसमें डिवाइडेड फ्रैक्चर आते हैं, अल्टीमेटली कमिंग टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंक्यूल्स. दिस पार्ट is a part of lungs. तो ब्रोंकाई से आपका lungs स्टार्ट होगा. Okay, and lungs is nothing but they are two pairs. So obviously there are two pairs, and the left and right. Now, how many lobes is left lung and how many lobes is right lung? Lobes. Right lung has 3 lobes and left has 2. So technically, अगर देखा जाए, this is what it is. The right lung is 3 lobes. The left lung is 2 lobes, and the left lung is smaller than the right. Okay, left lung में there is a small depression, जहाँ पे heart is situated. Okay, ये heart से draw represent किया. The heart is present over there. Okay, now the lungs are spongy, elastic, pinkish color structure, which are resting on. So there's a non-diaphragm that are the. So overall, we are going to study all these structures in detail. Okay. So starting with the first part is the starting point of the respiratory system, that is a pair, that is the nose, which has two nails, or what we say two nostrils. Within the nostrils are present your hairs and mucus. Now, what is the function of hair and mucus? Tiger fish market. So it traps the dust particle which is entering into the respiratory tract. उसके अलावा मेरा सर है कि नहीं सर है दिमाग है कि नहीं. What is the function of hairs? To trap germs and unwanted particles. To trap the germs as well as the dust particles. What is the function of mucus? Sebum. Hair follicle से तो होता है. ये sebum चाहिए. नहीं बताता तो है. अरे मैडम, अपन नॉक के बारे में बात कर रहे हैं, हेयर के बारे में बात कर रहे हैं. तेरी गलती नहीं. Okay, what about the mucus function? The dust particles which are trapped by the hairs, which act as a filter over there, that gets entangled into this mucus and it's periodically thrown out. So whenever we bath, sneeze, etc., थोड़ा गिर जाता है. उसके अलावा निकाल ही देते हैं. Some of them have a habit, है ना? Okay, so that also helps in the part. But apart from that, most important function, it is the hair and the mucus which keeps the air warm and slightly moist. So because at the base of the hair there are blood vessels, जो हमने पढ़ा था skin chapter में. So the heat is represented from that, keeping the air slightly warmer, which enters into the nose. At the same time, mucus being sticky in nature, it gives slightly moisture to the air. So there are two requirements. Because of the hair and mucus, the air becomes moist
and it becomes warm. Two very important parameters for the diffusion of gases. अगर थोड़ा air warm होगा या moist होगा, diffusion at the level of the lungs would be much faster. So that's about the nose part. Now, inside the nose, that is what we say on the inner part, there is a nasal cavity. Within this nasal cavity are present your sensory cells responsible for the smell, olfactory receptors. Olfactory receptors, they are in pockets. So अगर आप ऊपर का part देखोगे तो ये nose का ऊपर का part है. यहाँ पे there would be the sensory cells which are responsible for the olfactory, that is smell part. So that's about the nasal cavity. Now, the nostrils are separated by a septum, so there is a cartilage septum separating them out. And most important, there are hairs, mucus, and the sensory cells. कोई doubt है? आगे बढ़ू. Apart from that, nose also helps in talking. हाँ, न वगैरह, न वो आपके nose के इससे आ जाता है. Okay, so there are also helps in speaking in terms of certain words. Okay, which no के pronunciation से, नाक के pronunciation से वो आता है. कि वो न्य न ऐसे जो बोला जाता है, वो आपके nose से आ जाता है. Okay, then comes nasopharyngeal cavity. अब जैसे nose से आगे बढ़ोगे, it will combine to the mouth part. Okay, common area. That common area in the nasopharyngeal cavity, book में mention नहीं है, तो leave it. Further moving down is the pharynx, again a common passage. Now comes the most important part, that is larynx and trachea. Just at the start of the trachea, there is what we say as larynx. Now, what exactly is larynx? Another name. Voice box, also known as Adam's apple. So, what is its function? The larynx, which is something like a shield structure, there are cords into it. So, when the air passes through this larynx part, ligaments होते हैं, cord की तरह काम करते हैं. So when the air passes through these cords, what is happening? They start vibrating at different pitches. So when they start vibrating at different pitches, obviously they create a typical sound. That is what we say as voice. Am I clear? क्या हुआ अभी? चाहे तो तुझे 9 बजे भी छोड़ सकता हूँ. So here the voice box is nothing but a part, that is larynx. Now just below the larynx, okay, larynx के साथ में आपका thyroid part भी दिखाई देता है, just near to it. But most important, below the larynx is your windpipe, known as trachea. Now windpipe जो है, just behind the windpipe is the esophagus. Esophagus is a very delicate pipe. It's a delicate pipe which can squeeze. So when there is no food, etc., it simply collapses. Okay? Up. When you are breathing, etc., what happens? This portion is raised up or epiglottis open हो जाता है. The opening of the trachea. So ये trachea वापस draw कर रहा. This trachea is having the opening known as glottis. On top of that, there is a flap-like structure known as epiglottis. So when you are eating something, what is happening? Epiglottis closes and the food enters into the esophagus. But जब आप सांस ले रहे हो, food नहीं खा रहे, तो what is happening? This is slightly pulled upward. इसके वजह से ये ऐसे चला जाता है and the esophagus contract and ये open हो जाएगा and the air enters into the trachea. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, which would be application based question. We should not talk while eating the food. Give reason. Because while talking, gives some amount of air produced by or sound. इतना जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा कम. Because the food can enter the. एक कुछ ज्यादा ही कम होता है. While speaking, it is air which थोड़ा better. Then we should not talk while eating. Answer obviously क्या वो अंदर जा रहा है.
But I don't need to show the correlation of talking and this part. So when we talk, we respire. So air enter कर रहा है, leave कर रहा है, उतना जरूरत नहीं है. So when we talk, we are respiring simultaneously. At the same time, we are eating the food also. So the food by mistakenly enters into the windpipe, leading to choking or coughing effect. Am I clear? कोई doubt है? Shall I move ahead? Now comes the trachea. The trachea is nothing but a small tube-like structure, again a delicate structure which can easily collapse when there is no air. So it is supported by cartilage rings. So first question, what is the function of cartilage rings? To support the trachea, to prevent the trachea from collapsing. ऐसे भी और ऐसे. So that is what the cartilage rings is. बेवकूफ जैसा question. What is the shape of cartilage rings? Sir, ring या circle ही होगा. But the answer is the cartilage rings are C shape. So second question, why are cartilage rings C shape? वो तो रिंग में भी हो ही जाता पर. Why are the cartilage rings C shape? The answer is very clear. अगर वो रिंग होता, थोड़ा वो expand होता, no doubt. But can it expand beyond that? Cartilage है, थोड़ा flexible है, तो इतना भी नहीं कि पूरा flexible है. So it would burst. अगर pressure बहुत ज्यादा है. Okay, it's like you putting the air in the tire of your vehicle. लगा के रखा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ज्यादा हो गया, it will simply burst. तो यहाँ पे भी वो burst होने के chances है. But the cartilage rings are arranged in such a way that the part which is without cartilage, ये वाला part, that is placed on the back side of the trachea. So all the rings would be in the front side, or back side में there would be no cartilage. That leaves a space for expansion. So if the air is slightly at a higher pressure, it would expand at that side. पीछे की तरफ क्या है? Esophagus है. तो सिर्फ press करेगा esophagus का. But it is still getting ample amount of space for its expansion rather than bursting. And that is why there is a presence of cartilage rings. कोई doubt है? So two questions. What is the function of cartilage rings? And why are the cartilage rings C-shape? The function is to support, prevent the trachea from collapsing. They are C-shape, a space left intentionally for expansion when the pressure is at the air enters at a high pressure. कोई doubt है? आगे बढ़ू. Okay. From the trachea, then further it divides to form the main division. That is bronchi. वो सब पहला डिवीजन होता है into left and right. That is known as primary bronchi. उसका further division secondary. उसका further division tertiary. Further divides to form much smaller tubes. Primary bronchioles, secondary bronchioles and मतलब branch out होती जाएंगे. Primary, secondary and tertiary bronchioles. Now, मान लो वो tertiary bronchioles इधर यहाँ पे आ जाएंगे और होते. So the tertiary bronchioles, which are the end part, okay, they are very thin. What is the diameter? The diameter is 1 millimeter. कितना आता है 1 millimeter? ये 1 millimeter हुआ? ये भी 3 millimeter होगा. Your pen pencil point is 0.1. तो थोड़ा उससे बड़ा. 1 millimeter एक dot हुआ line का. So that much size is the bronchioles. So if I draw only the bronchioles part, the last part, that is tertiary bronchioles. ये अगर मान लो tertiary bronchioles का part है. So the tertiary bronchioles ultimately end up
into a bag-like structure. What is that bag-like structure? Known as alveoli. So we have the last structure, that is alveoli, also known as ASM. Now, what is the significance of these bronchioles? What is present on the trachea? C-shaped cartilage rings. These C-shaped cartilage rings are present on the primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, primary bronchiole, second, but they are absent on the tertiary bronchiole. So tertiary bronchiole 1 millimeter में क्या cartilage support करता है? Okay, so इस part पे there are no bronchioles, there are no cartilages, and they end up into a bag-like structure known as alveoli or air sac. यहाँ तक कोई doubt है? Now, if I take a alveolar, single alveolar, सिर्फ representation कर रहा क्या वो balloon like structure is alveolar. Surrounding to this alveolar is the blood capillaries. Now, the alveoli or blood capillaries के बीच में there is a space which is filled with fluid. Okay. Now, this fluid is keeping the alveoli moist. It is keeping it distended, and most important thing, it helps in faster diffusion of substances across. So from the alveoli, the substance will move into the blood capillaries, and from the blood capillaries, it will move into the alveoli. So exchange of gases is occurring to this fluid. Without a, अब आते हैं the lining of the respiratory tract. So if I take from the trachea, say नीचे almost alveoli तक, what I find is the trachea and the bronchi, etc., are lined by ciliated cartilage rings. Cartilage rings are never present over there. उसका reason क्या है बताऊं? अब the entire respiratory tract is lined by ciliated epithelium along with mucus secreting cells. So the entire lining is filled by mucus, keeping the tract moist, and whatever germs, etc., anything enters, what is happening? Cilia एक order में beat हो रहा है. So this cilia helps draining the air inside the alveoli. मतलब lungs तक लेके जा रहा है. At the same time, जो भी mucus है, that would be expelled out on the outer side. मतलब air ऐसे जा रहा है, mucus ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. So this mucus will keep on moving outer, and then it will be expelled out. Okay. वही mucus sometimes comes in the form of curve, etc. Sputum की तरफ बाहर आ रहा है. So whatever dust particle, etc., enters by mistake will be taken care of that mucus. That's the lining of the respiratory tract by ciliated epithelium. कोई doubt है? Now the lungs, जो हमने कहा था, ultimately it enters into the lungs. So alveoli comes into the lung part. Alveoli is a bag-like structure. They are very delicate, thin, membranous structure. It is much thinner than what I can say. Oh, तुम्हारा मतलब plastic bag भी बहुत ज़्यादा है. अपन वो paper तो और भी. The plastic bag which is about that वो अपने को नहीं डस्टबिन का बैग होता है को प्लास्टिक का धनिया वाला बोला उससे पतला डस्टबिन का बैग होता है. तो नॉर्मल जो रास्ते पे मिलता है डस्टबिन का ब्लैक कलर के बैग होते हैं वो तो ऐसा ट्रक के प्रोडक्ट से बढ़ जाता है. सो उससे भी पतला होता है आपका एल्वियोला. एंड नाउ इफ यू आर फीलिंग बोर, मैं बोर हो रहा है, तो अपन ने किसी इंसान को कट कर दिया, रिबकेज ओपन कर दी. रिबकेज ओपन करने के बाद फाइंड पिंकी स्ट्रक्चर दैट इज लंग्स. लंग्स को कट कर दिया, उसके अंदर अपने को से बलून्स की स्ट्रक्चर दिखाई देंगे व्हिच आर एल्वियोल. अब यू कैन से बलून, यू कैन से लॉलीपॉप, यू कैन से व्हाटएवर. लॉलीपॉप जैसा दिखता है ये. सो अब और भी बोर हो रहा है तो अपन टाइम पास करने के लिए एक एक को खींचते हैं. You plug out one alveoli. So when you plug out one alveoli, in a lung there are millions of alveoli. Okay? अब उसको plug out करने के बाद कुछ ज्यादा ही और बोर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस alveoli को ओपन अप करते हैं. So it is a squeeze back.
So we try to open up into a plain sheet. We'd like you take a paper, उसको ऐसा scramble कर दो, ऐसा बॉल बन जाएगा. अब वो बॉल को यहाँ पे लगा दो तो एलिवेलेबल. अब अपन इसको निकाला और उस पेपर को ओपन अप कर दिया तो अपने को प्लेन शीट मिलना. Now that millions of there, 1 million के आसपास, उसको ऐसे अरेंज करते जाओ एक के बाद एक, तो टाइल लगाते हो ऐसा. कई बुक्स में लिखा जाता है it covers about 70 square meter, कई बुक्स में 600 to 700 square meter, sorry square feet, और कई बुक्स में it is 1 tennis court. उतना बड़ा एरिया वो कवर कर. So 1 tennis court, I hope tennis court देखा होगा. Okay, तो उतना surface area is crumbled up in this much area, जो half by half भी नहीं होगा. Okay, so उतने area में highly crumbled, showing that alveoli are the last part where air diffusion takes place, and for the greater air diffusion I required large surface area which is provided by the alveoli. Without air, now comes the lungs part. तो अपन ने कहा था 3 loop है, 2 loop है, pinkish color, whatever. But on top of the lungs, there are a supportive and protective structure known as a membrane. Known as membrane होता है. A membrane known as pleural membrane. जैसे हार्ट के ऊपर कार्डियम होता है, पेरिकार्डियम, किडनी के ऊपर रीनल कैप्सूल होता है, वैसे लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन. अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है दिखने में एक लेयर है, मतलब एक बाहर सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, बट व्हेन यू सी इट प्रॉपर्ली ये ऐसे नहीं, ऐसे एक ही पेज की है. बोल rupture because of damage cell. Puncture होता होगा. क्या? Exactly मुझे तो नहीं पता, पर जहाँ तक तेरा वर्ड का वैसा, तो it will simply burst open because of some damage. Sharp object will puncture into the lungs itself. बोर हो रहा है. ये बोर हो रहा है ना, तो हम सबसे घटते हैं. देखना ओके. बहुत लाइट है, खत्म हो गया. अभी एक सिर्फ लंग्स बता रहा हूँ. थैंक यू मैम. On top of this is the green line जो है वो रिप्रेजेंट करता है पूरा मेम्ब्रेन को, पर दिखने में वो सिंगल लेयर है. When see it nearly, you'll find कि वो सिंगल लेयर ना होते हुए there are 2 layers. There is a outer pleural membrane and there is a inner pleural membrane. So वो लेयर 2 है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है. Between these 2 pleural membrane there is a fluid present. इसके अंदर भी फ्लूइड है, इसके यहाँ पे फ्लूइड है, so that it keeps the lung moist over there. Now, outer pleural membrane is known as parietal pleural membrane. You are not writing this term. बोर्ड में मतलब एग्जाम में टीचर मार्क्स देंगे नहीं है. जो बुक में टेक्निकल टर्म दिया है, so it is the parietal pleural membrane which forms the outer part, whereas the inner part forms the visceral pleural membrane. Viscera मतलब inner. So आपको बोलना visceral mass या visceral fats, which is the inner fats. So यहाँ पे visceral is the inner membrane
and parietal is the outer main. Two together forms the pleura, which is nothing but a protective tissue around the lungs. Between them, there is a space which is filled with the watery fluid, moisture maintained करने के लिए. So when the lungs expand, there is no friction between them. So एक lubrication का काम भी कर रहा है. And on top of this, obviously there are ribs to protect. Okay, so this is about the lungs, trachea, larynx, pharynx, and everything over. कोई डाउट है? ओके, अब तुम्हारा जो अलग बुक है इसमें ज्यादा नहीं है, पर सलीना में एक पॉइंट मतलब दिया हुआ है क्या, द लंग्स के अंदर दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द लंग्स. अब वहां पे एक बड़ा पैराग्राफ दिया है और फिर दो बड़े डायग्राम दिए, व्हिच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. नाउ व्हाट आर द ब्लड वेसल्स व्हिच आर सप्लाइंग ब्लड टू द लंग्स? सो ऑब्वियस है, if I again draw the alveoli, और ये ब्लड वेसल है, यहां से ब्लड आ रहा है और यहां से ब्लड जा रहा है. सो दिस ब्लड वेसल इज अ ब्रांच ऑफ पल्मोनरी artery, whereas this forms pulmonary vein. What is pulmonary artery? Okay, a pulmonary artery starts from the, कहां से आ रहा है, heart. What type of blood? Deoxygenated. Deoxygenated. An exceptional artery which carries deoxygenated blood, which when enters into the lungs start dividing to form capillaries. So alveoli के बाहर वो capillaries बन जाएगा. From the capillaries again unite to form pulmonary vein, which again goes back to the heart, carrying oxygenated blood. An exceptional vein which carries oxygenated blood. Now, pulmonary artery, from which chamber of the heart वो निकल? Second. Now, और left or right? right ventricle से blood पंप होता है pulmonary artery. आर्टरी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वहां पे द वेंट्रिकल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो वेंट्रिकल इज पंपिंग द ब्लड आउटसाइड टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द पल्मोनरी वेन एंटर्स इनटू द लेफ्ट auricle, which receives the oxygenated blood, and that is how the blood circulation to the lungs is. अब बुक में सिर्फ एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, यही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है छोटे पैराग्राफ, और उसके बाद दो बड़े डायग्राम दिए टू शो, एक बड़ा पैराग्राफ दिया है टू शो दैट कलरफुल डायग्राम. The blood vessels going to the lungs is shown by a dark red and a light red color. Oxygenated blood है तो it is slightly light, the bright red है, और deoxygenated blood है तो शायद वो dark red. So बोर्ड में ना स्कूल में कलरफुल डायग्राम आने वाला नहीं है. सो अगर आया तो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा डार्क कलर और थोड़ा लाइट कलर ये याद रखना है टू लेबल द पार्ट्स. पर इतना आना नहीं चाहिए बिकॉज़ बहुत कंफ्यूजन होता है उस केस. So that's about the supply of blood vessels to the lungs. At the end you should know is pulmonary artery and pulmonary vein. कोई डाउट है? Okay, so that completes the blood supply, lungs, the trachea, everything in terms of the part. फिर आता है the lungs rest on a muscular structure known as diaphragm. 5 मिनट दे रहा हूं, बुक्स ओपन करके आपके लंग्स तक जो भी है जस्ट ऐसा गो थ्रू करूंगा. इनके बुक में बहुत शॉर्ट किया हो. Nose, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, alveoli. Characteristics of respiratory tract, structure of lungs. वहां तक ही पढ़ना है, ये एक पेज. One single page you will learn. तुम्हारे इसमें प्रॉपर हेडिंग में दिया होगा. चालू होता है. अरे there are having ligaments which vibrate to create sound. Voice box है ना.
लारिंग से प्रक्रिया चालू पॉकेट्स जो हमारी हेटेरी है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा पॉकेट्स इज अ वेस्टिजियल so it will not take a difference for you waiting see pockets पे नहीं है pockets पे नहीं है थोड़ा ऊपर होगा तो better है बस पेन को ऐसा जो कोई यूज कर तो थोड़ा डायरेक्ट हो गया थोड़ा पेन होगा but it will not really affect your movement as such थोड़ा बहुत होगा because bone है actually तो वर्क तो होगा ही हाथ बोल बस क्या अरे जहाँ पे नेजल और फेरिंग्स मीट होते हैं पीछे की तरफ उसको आपके सिलेबस में नहीं है लीव इट उसको नेजोफेरिंजियल कैविटी की कहा संगम अरे ज्वाइन होता ना दो जगह पे मैंने टाइम पढ़ने के लिए दिया है वो एक पेज कौन सा पेज सर जरा बताएंगे आप तो कान के नीचे बता मारना चाहिए दस तरह मारना सीखना ही चाहिए रिक्वायर्ड एट टूडेज जनरेशन प्रोटेक्शन सर कमेंट पार्टनर ले लो तुम क्या क्लास में हरी करता हूं मेरे एक को मारा था एक को तो एक ही पड़ा था अच्छा कौन क्वेश्चन अंदर कान में बात से डबल किया तो एक ही जगह पे बात अरे तेरे काट में मारा नहीं तेरा काम करेगा पापा को मारा I don't believe in that. सर I strongly believe. मेरा रिपोर्ट किस में लग रहा है तो सर पापा को मारा मारा था राइट और ऑप्शन इनके पीछे गलती से और एक से मारा था किसे मारा था बराबर छोटी रहेगी तो फास्ट करके मारूंगा और नालियों गलती है मैं सबने से एक बार फिर मारा था बेटा चाहिए आप उसका ग्रैंडफादर की आइडिया जानवर ही है उसका थैंक यू सर रीड आजूबाजू के आगे और बताइए पढ़ो नो इट इज स्टिल गरम हो रहा है जिसको गरम हो रहा है मैडम आपको बोलो मैं पीछे बैठो और कम हो गई वहां पे ऐसी बिल्कुल नहीं आती है यहाँ पे भी नहीं आ रही स्टैंड हुआ ये फॉर 10 मिनट्स लंडन कितना गर्म हो रहा है इधर मत करो सर बंद नहीं करना अरे तो फ्लैप पीछे कम जाओ एक क्वेश्चन जो आपने राइट there in the formula that हमारे पास है उसका प्रेशर डिफरेंस हां बॉडी प्रेशर कम होता है शैडो तो ऊपर प्रेशर कम हो रहा है ना तो वो वैक्यूम की वजह से अपना प्रेशर मेंटेन कर रहा है और इफेक्ट जल्दी होगा ही होगा Shall I go ahead? Yes, sir. Incomplete. हाँ, incomplete मतलब वो C shape. It is not complete ना. अगर complete होता तो उसको पूरा रिंग ही बोल देते हैं पर वो है नहीं ऐसा. There are small part left out for purposefully.
Madam, either I throw you out, which is a better option. Yeah, many parts are there. Shall we go ahead? Yes, sir. अब इसके आगे आपके बुक में they are given you in terms of the mechanism of respiration in terms of breathing, that is inhalation and exhalation. What we say as inspiration and expiration, also known as breathing in and breathing out. अब बुक में आपके डायग्राम दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, पर जो ये बुक है इसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, ये बेटर एक्सप्लेनेशन इन सलीना। अब उसके अलावा सलीना में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन अ बिग पैराग्राफ्स। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न दैट पैराग्राफ्स, हमें उसको कट शॉर्ट करना है एंड वी डोंट नीड टू बाय हार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने अंडरस्टैंड कर दिया, उसमें सिर्फ दो चीजें ऐड करोगे, वो पूरा पैराग्राफ उसमें कवर होगा। नाउ व्हाट आर वी सपोज्ड टू लर्न? एट द एंड ऑफ द डे हमें सलीना में एक ब्लू बॉक्स दिया है, लेफ्ट हैंड साइड टेबल, हमें वो टेबल बाहर करना। इफ यू आर एबल टू लर्न दैट टेबल, आपका पूरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कवर होता है। मैं वो भी नहीं करने बोल, आई एम मेकिंग इट अ मच सिंपलर वे। दोनों में से कोई एक लर्न करना, लर्न ओनली वन, वो भी आपको बेसिक लर्न करना। अगर आपने बेसिक लर्न कर लिया, यू नीड नॉट ओपन द टेक्स्ट बुक टू लर्न एट ऑल, आप सीधा खुद का आंसर लिख सकते हो, इतना इजी है। सो वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। 2 मिनट के टेक्स्ट बुक को उल्टा रखना, आई डोंट वांट टू फोकस ऑन टेक्स्ट बुक। तो आपको बेसिक पता है, पहला वो समझना है। रखिया लंग्स, लंग्स इन अ साइड व्यू, आप ऐसे देख रहे हो, तो अपन दो लंग्स नहीं एक ही तो साइड में देख रहे हैं, एंड बिलो द लंग्स इज द diaphragm. So अब इस स्ट्रक्चर में we have lungs, we have diaphragm. What is protecting the lungs? Rib cage. तो यहाँ पे the pleural membrane is there, but most important is the rib cage actually protecting the lungs. So we have rib cage drawn over here. Ribs. Now these ribs are not just only bones attached over there, but इनके बीच में between the ribs there are specialized muscles. These muscles are intercostal muscles. It is costal, C-O-S-T-A-L, and not coast, C-O-A-S-T नहीं. Okay, so it is intercostal muscles. Then अभी फिलहाल कुछ और सोचने की जरूरत है, सिर्फ बेसिक पे ही याद रखना है। रिब्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है, लंग्स एंड डायफ्राम। अब इस स्ट्रक्चर में आई वांट यू टू गिव मी टू स्ट्रक्चर्स जो मस्कुलर है एंड डायफ्राम। उसने बोला दूसरा क्या है? Intercostal muscles. So these are two structures which are muscular in nature. Okay. अब हमें क्या सीखना है, पहले ये भी समझना। We have to learn a process known as
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में होता क्या है? होता क्या है? क्या अंदर आ रहा है, जा रहा है? एयर सेकंड इन। एक्सहेलेशन में एयर इज गिवन आउट। जो कार्बन डाइऑक्साइड को सब अपने में सिंपल रख रहे हैं अपन, चलो बेसिक समझ रहे हैं कि एयर अंदर आ रहा है और एयर बाहर जा रहा है। सो हमें सिर्फ यही समझना है क्या ड्यूरिंग द इनहेलेशन एयर अंदर क्यों आ रहा है? Why is air entering in the inhalation and why is the air moving out during exhalation? ये हमें उस इंस्पिरेशन और एक्सलेशन का आंसर है। So now we try to understand this. हमने कहा दो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। So now muscles have an inherent property. What is the inherent property? They contract and relax. So contraction and relaxation. So now the diaphragm contracts. So upon diaphragm is contracting. अब diaphragm contract होने की वजह से क्या होगा? It becomes straight down and slightly straight हो जाता है. Okay? At the same time, अगर diaphragm contract हो रहा है, दूसरा क्या contract होगा? Intercostal muscles. ये भी contract हो रहा है. Okay? So when the intercostal muscles contract, diaphragm में क्या होगा? It becomes straight, okay, and slightly downwards. थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है. Intercostal muscles, because they are contracting, what is happening? वो किसको attached है? Ribs. So ribs pulled up and outward. You can see. आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ भी आ रहा है. So your rib cage is slightly moving up and out. That is because of the contraction of intercostal muscles. यहाँ तक कोई डाउट है? So अब डॉटेड वर्जन में मैं दिखा रहा हूँ. डायफ्राम यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ चुका है. रिब्स जो थे वो थोड़े ऊपर और थोड़े बाहर की तरफ आ जाएंगे. इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है, व्हाट इज दैट? दैट इज thoracic cavity. The upper part is thoracic cavity. जिसका पार्ट है lungs और इसका रिब केज बाहर आ चुका है, ऊपर और बाहर आ चुका है. डायफ्राम नीचे और फ्लैट हो चुका है. तो what will happen to the volume? So thoracic volume, cavity volume increases. बाहर नीचे, ये दीवार को मैंने वहां पे ढकल दिया, इसको वहां पे ढकल दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा. सो वॉल्यूम इंक्रीजेस. thoracic cavity volume increases. What about pressure? इनवर्स प्रोपोर्शन है. अगर आपका वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा. प्लस सिंपल है ना. अगर मैं इसमें एयर भर के रखता हूं और मैं दीवार को पुश कर रहा, एयर विल बिकम मोर डेंसर और मोर लाइटर. ऑब्वियसली थोड़ा पीछे गया ना, पर अगर मैं इस दीवार को और नजदीक 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 लेके आता हूं तो एयर डेंस हो जाएगा, बिकॉज कॉम्पैक्ट हो जाएगा. thoracic volume increases, inside pressure decreases. Where is high pressure now? So air on the outside is at a high pressure, and by default how does the air move? From a high pressure to a process known as inhalation. I'm repeating once again, children. I'm saying I am not gone in technical terms right now. मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं. अगर बेसिक समझ में आ गया, आप अपनी तरह से लिख सकते हो. The diaphragm is a muscular structure on which the lungs rest.
so it contract, thereby it becomes straight and pull slightly downward. Okay. At the same time, the intercostal muscles contract, thereby pulling the ribcage up and outward. So what is the resultant? The thoracic cavity, जहाँ पे lungs present हो cavity, that volume increases. So pressure inside the thoracic cavity, that is lungs, would decrease. The high pressure is outside, low pressure is inside the lung. So air from outside start rushing inside. A process known as inhalation or breathing. Am I clear? समझ में आया? Sure. अगर आपको समझ में आया तो अब सेम ऑर्डर में आप उल्टा करो for exhalation. So what will happen? Diaphragm. Relax. Yes. So diaphragm relaxes. So क्या होगा? We go back to the original position. So it form a dome shape again. ये dome shape बन जाए जो पहले था. के original shape is dome shape. के intercostal muscles relaxes. So now back to original place. That is, it is down and inward की तरफ है. Okay, backward. So what will happen? So inward and back. Original shape. So thoracic cavity volume decreases. Pressure increases. Where is low pressure? Outside. Where is high pressure? Inside. So here from inside, you start moving or shift outside. A process known as exhalation. Go down and sure. अचलन इसमें सिर्फ एक चीज और ऐड कर, लाइक डिश हो गया, थोड़ा ऊपर का ड्रेस ना वैसा लास्ट पार्ट यार. द इंटरकोस्टल मसल्स हमारे सिलेबस में रिब्स में दो इंटरकोस्टल मसल, एक बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. अब हमें क्या याद रख, हमें सिंपल चीज याद रख. हमने यहाँ पे जितना भी लिखा है इंटरकोस्टल मसल्स बार बार जो बोला, अब हमें याद रखना. ये तो समझ में आ गया क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों बाहर निकल रहे, इसमें दोनों अंदर जा रहे हैं. सो जो इंटरकोस्टल मसल्स हमने दोनों जगह पे यूज किया है वर्ड, वो बाय डिफॉल्ट में कौन सा मसल बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, thereby pulling the ribcage up and out. But exactly opposite होगा internal coastal muscles. ये क्या होंगे उस टाइम पे? रिलैक्स. ये सिर्फ उल्टा लिखना है उसमें. नहीं, ये रिलैक्स होने की वजह से भी यही इफेक्ट हो रहा है, दोनों का इफेक्ट सेम है, पर एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंटरनल रिलैक्स होता है. इस जगह पे क्या होगा? एक्सटर्नल रिलैक्स होगा और इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होगा. इतना ही ऐड कर दोगे सो आपके बुक में यही लिखा होगा. ओपन योर बुक्स, तुम्हारे ब्लू बॉक्स में तो प्रॉपरली लिखा है इसी ऑर्डर में. सो यू कैन सी द ब्लू बॉक्स. उस ब्लू बॉक्स में दे आर गिवन यू डायफ्राम का पोजीशन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, then thoracic cavity volume, pressure, and then ultimately how does the air move. वो पूरा टेबल उसी ऑर्डर में लिखा होगा. क्या? हाँ, तो एक्सटर्नल ना, रिबकेज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. तो आपको सिर्फ वही पार्ट करना है और कुछ नहीं करना. ओके, अगर वो पार्ट कर लिया पूरा टेबल कवर हो जाता है उसके अंदर. ओके, 4 मिनट है, कॉपी करना कॉपी कर लो, फोटो बेस्ट. ओके, उसके बाद टर्न टू नेक्स्ट पेज.
नहीं, हाँ, उसके बाद लंग वॉल्यूम्स लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी साइकिल लिखा हुआ है, ये दोनों बहुत छोटी चीजें हैं, पढ़ेंगे अपन और नॉट टुडे। अब उसके बाद आपके बुक में लिखा हुआ है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। सलीना में ये पहला दिया इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ इंस्पायर्ड है वर्सेस एक्सपायर्ड है। उसके अलावा द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड ऑन टू द रेस्पिरेटरी पार्ट, वो भी आपके बुक में लिखा है। उसके अलावा हाइपोक्सिया लिखा हुआ है, एक्सफिक्सिएशन लिखा हुआ है, एंड देन लास्टली दे आर गिवन इन सेलिनाइज एक्सपेरिमेंट्स जो आपके बीच में दिया नहीं। So this will be what we will be winding up. I think 3 minutes are there. Lung capacities. अब वो lung capacity सबसे important है, मार्क करना चाहिए। क्या वो नहीं बोल, रुको जरा, रुको। Lungs capacities कई स्कूल्स में बोलते हैं पढ़ने के लिए, कई स्कूल्स में उसको ओमिट कर देते, कैंसल ओमिट। अब मैंने अपने स्कूल में उसको बंद निकाल दिया है बिकॉज कोई इशू मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें 2 या 3 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बस। ये क्या उसमें पार्ट है जिसमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें आपको लंग कैपेसिटी दो, और वाइटल कैपेसिटी और टोटल वो पढ़ना होगा। उसमें ना है, जब एक रनर भागता है तो वो अपनी एनर्जी यूज कर लेता है, वो 2 सेकंड के लिए रुकता है, उसको अपना एनर्जी वो उसके लिए टर्म दिया है। बुक चेक करना। वाइटल अब इसका लॉजिक क्या है? बस इस for 2 seconds में भी उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा उससे, because their lungs are differently and they are having the endurance level at a different level. उनका मसल बिल्डअप और अपना मसल बिल्डअप अलग है, तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज डिफरेंट देन व्हाट आई वुड गेस। ऑक्सीजन डेप्थ excess oxygen taken by HCG वो डिपेंड करता है आपका एंड्योरेंस लेवल के ऊपर। तो अगर टुडे इफ आई स्टार्ट रनिंग मैं थक जाऊंगा जल्दी, और अगर मैं बहुत सालों से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा तो मेरा लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल विल बी वेरी हाई, कि मेरा कैपेसिटी बढ़ेगा। अरे क्या पागल है तुम, बैठ के ऐसे होता। Okay, so I think we stop over here. Then 3 चैप्टर बाकी है ना, 1 घंटा ये चैप्टर खत्म करने के लिए लगेगा। और हमारे सामने कंपल्सरी अरे पूरा सिलेबस है। हाँ 6 घंटा मिलकर कुछ बात होती है, पूरी बुक पूरा बुक नहीं। क्लास पे देख के मैं बस क्या बात है मार्केट की फीचर भी कहां क्लास होगा ये निशा व्हाट अ